The topic which we are going to discuss today, that is Manipur, ethnic crisis in Manipur, ethnic crisis in Manipur, or ethnic problem in Manipur, right? So this is the topic which we are going to discuss today. As far as the ethnic problem in the state of Manipur is concerned, Manipur has a history of ethnic violence incidents which took place in the state at various times. Right? In 2018, among the 7 northeastern states, Manipur remained the most disturbed state. Total violence incidents which took place in the northeast, those were 252 in 2018, and out of the 252 ethnic violence incidents or violence incidents, we can say 127, that means a little more than 50%, were recorded only and only in the state of Manipur. So it means in 2018, Manipur remained the most disturbed state as far as the violence incidents, as far as the violence incidents are concerned. So that is the point, right? And the second thing is that in 2000 also, in the month of March, you can say riots took place between the Kukis and Nagas residing in the state of Manipur, in which more than 100 houses were destroyed, right, were put to fire. And the reason behind those ethnic riots was that some Naga miscreants tortured the Jhum cultivation of Kuki people. So it means even today, even in the year 2020, we have some records of ethnic incidents or ethnic violence incidents in the state, right? And apart from that, in the year 2016-17, Manipur observed a very, you can say, long economic lockdown in the state that was imposed by the Nagas, right? That was imposed by the Nagas. United Naga Council declared an economic lockdown in the state of Manipur, and the roads leading to Manipur were blocked, and the Manipur was completely cut off from the rest of the country. So that was the scene there, and there was even the problem of supply of the essential goods to the state, and that you can say that band which was imposed by the Naga people, that started on 1st of November 2016 and continued till 19th of March 2017. So 139-day long band in the history of the Manipur. This is a very long band, we can say, which was observed by just one, you can say, ethnic tribe living in the state, that is the Nagas, right? So that means from here we can conclude that Manipur is not an easy state as far as the administration is concerned.
as far as the part of the Indian Union is concerned, right? So Manipur is also simmering, like we can say Assam, but the intensity in both the states may vary, right? So today we are, you can say, we will discuss on this topic. What is the ethnic problem in the state of Manipur? And before that, I would like to discuss uh, a little about the state of Manipur, right? Because I thought that is also important and I should discuss that also with you, right? So, as far as the Manipur state is concerned, you people must be knowing that Manipur state is like we can say this type. This is the sort of the map of the state of Manipur. Almost like this, right? It may not be exact, yeah, right? Because I have drawn it with the free hand here, right? So as far as the state is concerned, this is, we can say, the state of Manipur, right? This is the state of Manipur, right? And the neighbors of Manipur, as far as concerned, here towards the north, Manipur is bordered by the Nagaland towards the north, right? Bordered by Nagaland, right? And towards the west, if we say, Manipur is bordered by Assam state, right? Towards the west, Manipur is bordered by Assam state. And as far as this part is concerned, if I would, you can say, take this part from here like this, right? So this part towards this side, west side, this is, you can say, here is Mizoram, you can say, right? Here is Mizoram, right? And entire the remaining part, that is, we can say, Myanmar, which is called Burma. Okay, so uh, it should be clear to you because the geography of the Manipur is also important. Uh, Important in the sense that anytime any type of question can be asked in the UPSC or in the state PCS also, right? Because the question may be which among the following is not a state having border common with Manipur, right? They may write Nagaland, Assam, Mizoram, Tripura, or Meghalaya can be written there, right? So sometimes we may get confused that whether Meghalaya is sharing the border with Manipur or not, right? So like, for example, right? So the question can be of this type, that which of the following states of India have has sorry uh, does not does not have does not have border, right, common with India. ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका बॉर्डर भारत के साथ कॉमन नहीं है? So which of the following states has not border common with India? So this type of question can be asked to you, right? So नीचे आपको वहाँ the choices can be given. Let's suppose the first choice is Assam, right? And let's suppose the second choice which is given here, that is suppose Nagaland, right? And suppose the third choice which is given here, that is Meghalaya, right? And the fourth choice which is given here, let's suppose that is Mizoram, right? So we have been asked to tick one, right? Which is the wrong, which is not sharing the border with, we can say, Manipur, right? So the answer is obviously, you can say, Meghalaya is our obvious answer, right? So
that is सर there. सर आपने सर क्वेश्चन में सर कॉमन विद इंडिया लिखा है। हाँ जी Sorry, सर। sorry, let me correct it. ओके सर, ओके सर, ओके। Yes, वो तो लिखने में गलती है। कॉमन विद इंडिया तो हो ही नहीं सकता इनमें से क्योंकि वो तो सभी इंडिया के अंदर ही है ना। सो मणिपुर, लेट मी राइट हियर मणिपुर, राइट। Thanks for pointing out Manipur. So which of the following states of India does have, sorry, इसको भी मैं correct करूँ, does not, right, does not have border common with India. So this type of question can be asked to you there, right? So this is about the little about the, we can say, geography or the borders of the Manipur, right? So now if I move little further on this, we can say, right? So as far as the we can say further in this, let me explain that Manipur is a sort of the, right, Manipur is an eastern state, which can be said a door to the East Asia, which can be said a door to the East Asia. The reason being, if we want to enter into East Asia, you can say Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, towards that side. So we will have to enter through the Myanmar, and there are the states of India through which we can enter into Myanmar are by road. That is the Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, and Mizoram. These are the states through which we can enter into Myanmar. Is it clear? And as far as the geographical terrain of the Arunachal Pradesh and Nagaland is concerned, you can say it is difficult to cross the eastern hills. You can say to make road there, okay, to cross over to Myanmar from Arunachal Pradesh or from Nagaland side, right? So that is why Manipur is an, you can say, easy passage to the East Asia through which we can enter into Myanmar, and even you can say road connectivity is already there from Manipur to Myanmar, right? So that is why this is my, you can say, personal opinion that it can be said a door to the, you can say, East Asia, right? We can say it like that, right? So as far as the you can say a little bit about the further more about the geography of this state, we can say, right? Because somebody's mic is on again, I have to tell you today, please take care, right? So as far as this is concerned, बेटा इसका कुछ ऐसा है कि यहाँ एक ये, this is some sort of the, we can say, oval shaped, right, oval shaped region. ये कुछ oval shaped region है, बीच में, exactly बीच में है, right? So इस we can say oval shaped region है जो, एक ये है, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि एक रीजन इसमें यहाँ से बनता है, यहाँ से लेकर के, सॉरी, एक रीजन इसमें बेटा, ये मैं नोइंगली मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बाद में फिर हम इस पे बातचीत करेंगे बेटा। एक इसमें ये जो नीचे वाला पार्ट बनता है, एंटायर जो नीचे वाला पार्ट है, और एक ऊपर वाला पार्ट रह जाता है। सो ऐसे इसको हम, यू कैन से, डिवाइड कर लेते हैं, राइट? सो बेसिकली इसमें ये जो तीन रीजन्स बस आपने ऐसे ही ध्यान में रखने हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट?
So as far as the you can say political history of Manipur is concerned, right? Political history of Manipur is concerned. We can say at the time of independence of India, right? At the time of independence of India, right? So Manipur, right? At the time of independence of India, Manipur was ruled by Manipur was ruled by a king, right? A king, and the name of the king was, we can say, that is Buddha Chandra. Buddha Chandra was the name of the king who was ruling Manipur at the time of independence of India, right? So after the independence of the country, after the independence of India and after the partition of India, we can say, right? In 1949, in 1949, the king means Buddha Chandra, right? The king, we can say, merged Manipur into India, by signing an instrument of accession, instrument of accession, right? Instrument of accession. So that is this, by signing an instrument of accession, right? And after that, after that, from we can say from this, from independence of India till this year, which is the 1949, right? From independence of India till 1949, right? So Manipur was ruled by a king, King Buddha Chandra, right? And from 1949 till 1956, till 1956, right? So Manipur, the status of Manipur remained a centrally administered territory, right? So it remained a centrally administered territory, centrally administered territory. So Manipur remained that, right? That was the state political status of the Manipur during that time. So Manipur remained a centrally administrative territory, and in 1956, right? In 1956, from 1956 till 1971, right? 1956 till 1971, Manipur remained a union territory of India, right? Till this time, Manipur remained a union territory, UT, right? So ये एक union territory रहा इस time तक, right? So Manipur remained a union territory, right? And from 1971 onwards, Manipur is a state of India, right? Manipur is a state of India. So we can say like this, right? Manipur is a state of India, right? So that is the, so as far as Manipur is a state of India today, right? So this is the political journey of the state from the independence of India till date, till we can say today, till today we can say. And after this we can say, after this, uh, from 1980, right? From 1980 till 2004,
till 2004, Manipur was declared that remained a disturbed state, right? Under the provision of AFSPA 1958, right? AFSPA, you must be knowing about this. AFSPA means Armed Forces Special Powers Act. So Manipur was declared a disturbed state in 1980, right? And its status remained the same till the year. Its status remained the same till the year, we can say, 2004, right? So, what is this AFSPA? That is the Armed Forces Special Powers Act of 1958, right? So this was the status of the Manipur from 1980 till 2004, right? So now, though it is not a part of this topic, but let me tell you that the question which may arise in your mind, that who can declare, who, first of all, under which law, under which law a state or UT can be declared disturbed, एक तो ये क्वेश्चन निकलता है इसमें से कि कौन से लॉ के अंदर हम किसी स्टेट को या किसी यूटी को हम डिक्लेयर कर सकते हैं एक वी कैन से डिस्टर्ब्ड स्टेट और डिस्टर्ब्ड यूनियन टेरिटरी, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर उसका consequence क्या होगा वो भी हम अभी देखते हैं, right? So under which law it is possible, right? So if we talk about the law, that under which law a state or union territory can be declared a disturbed state or union territory, as I have told you, AFSPA, right? 1958. It is under the Armed Forces Special Powers Act 1958 that a state or union territory can be declared disturbed, right? And the next question which arises from here, is that right, who has the power to declare a state or union territory disturbed, right? Who has the power to declare a state or यूनियन टेरिटरी डिस्टर्ब? ऐसा किसको पावर है कि वो इसको डिस्टर्ब डिक्लेयर कर सकता है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? सो इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी who has the power to declare a state of or union territory as disturbed, right? Governor of state or administrator of union territory is the one who can declare so, right? Administrator of union territory who can declare so, administrator of union territory. Is this clear up to this point? Right? So Yes, sir. this, yes, so this is there. And the next important question which can come into your mind, that what happens if a state is declared, what happens if a state is declared disturbed? अगर किसी स्टेट या यूटी को हम डिस्टर्ब्ड डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर उसका consequence क्या होता है, उसका सिट्टा क्या होता है? So that is also an important question, right? What happens? So as far as this
what happens is concerned. So that means Armed Forces Special Powers Act 1958 is invoked in that state. Armed Forces Special Powers Act 1958 is invoked in that state. Invoke means लागू कर देना. Invoked in that state, right? Invoked in that state. So वहाँ कुछ जो armed forces हैं, those got some special powers, right? They can enter into any house, they can search any property, they can arrest any person, interrogate any person, even without the warrants also. So that is there. But Armed Forces Special Powers Act जो है till date it remained, or you can say it is at present, you can say in some of the states, right? So ये कौन सी स्टेट में आज तक आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लग चुका है, या कौन सी स्टेट में अभी है, राइट? इसको मैंने दोनों में लिया है. कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पहले लग चुका है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां प्रेजेंटली भी है, राइट? सो वी कैन से द एरियाज दैट रिमेन्ड अंडर, इसमें से मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, राइट? बिकॉज दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. सो द एरियाज दैट रिमेन्ड अंडर or are under, right? Areas that remained under or are under the FSPA. ऐसे कौन से एरिया है जो इसके अंडर रह चुके हैं, जहां अभी इसके अंडर हैं? It is very simple to remember it, Vidya. If we want to remember, if you want to take it easy, right? The one thing is that all the 7 sisters of Northeast India, all the 7 states of Northeast India, right? And then Punjab, Chandigarh, Union Territory, and Jammu and Kashmir, right? These are the various regions of India where Armed Forces Special Powers Act 1958, right, either remained invoked or is you can say continuously, is we can say at present, right, applicable in some state, or a state or UT is at present under the Armed Forces Special Powers Act, right? So this is easy to remember this, I think, right? And the consequences there. And now the next important thing is there, beta, that as far as the one important point here, which I would like to tell you, that as per the provisions of the Act, once a state is put under the Armed Forces Special Powers Act, right, as per the provisions of AFSPA, right, once a state is put under the right, is put under it, it remains so for a minimum period of 3 months, for a minimum period of 3 months, right? So this is an important question for your preliminary examination, right? जो कई बार वैसे डिस्कस नहीं होता, पढ़ाते पढ़ाते डिस्कस हो जाता है ऐसे किसी और टॉपिक के साथ, राइट? सो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है, राइट? सो जैसे यहाँ तक बेटा सबको क्लियर है ये जो अभी मैंने करवाया है आपको? यस सर.
Yes, ओके yes, sir. ओके। तो सो बेटा अभी अभी क्या है, अभी मैं आपको फर्दर करवाता हूँ। तो लेट्स सपोज बेटा कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, राइट। क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is are correct about the Armed Forces Special Powers Act, right? This is the, let's suppose, right, is or are correct about the Armed Forces Special Powers Act, this 1958, right? It can be there, मैंने यहाँ 1958 नहीं लिखा। number one, right? So it provides special powers to armed forces deployed in a state or UT, right? Once it is declared disturbed under the provisions of Armed Forces Special Powers Act, right? So इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको देखने में ये लग सकता है कि इस क्वेश्चन के अंदर तो है तो कुछ भी नहीं है, सॉरी इस स्टेटमेंट के अंदर बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि समटाइम्स it is clear to the students that Armed Forces Special Powers Act can be invoked in a state, right? But this statement, the state which has been declared disturbed, under which law a state can be declared disturbed, that can be confusing to you. Whether it is under the Armed Forces Special Powers Act or a state is declared disturbed under some, you can say, other law, right? And after the state is declared disturbed under that other law, after that the armed forces are deployed into that particular state, right? So that can be the confusion to you. So that is why I have put this statement, right? So second statement can be, right? It is the President of India. It is the President of India who is authorized to authorized to declare a state, disturbed on the recommendation of the governor, right? On the recommendation of governor or governor of a state or administrator of a UT, as the case may be, right? Administrator of a UT. So this is the next statement which can be there, right? So कौन कर सकता है उसको? So this can be the next statement, right? And the next statement जो है, the next statement है, right? So next statement is we can say that once a state or UT is declared, right, disturbed, right, it remains so. It remains so for
minimum period of 3 months. So this is the next statement which is there, right? So that is there. For a minimum period of 3 months, it is there, right? And these are the three important statements, let's suppose, which are here, right? And you can say now you have been asked that which of the statements is correct, right? So we need to, there will be codes which will be given in the examination. So let's suppose one code says that one only, right? And the second code states that two only, right? And the third code states that you can say 2 and 3 only, right? And the fourth code states that it is, you can say, यहाँ हम 1 and 3 करते हैं, right? 1 and 3 only. And the next, it is that 1, 2 and 3, right? 1, 2, 3. So ये, right? And बेटा ऑनेस्टली बताओ कि इससे पहले किस किस को मालूम था इसका आंसर? अब तो आपको मालूम हो गया, ऑनेस्टली बताओ। नहीं, क्लियर नहीं सी सर पहला। ओके, सो एनीबॉडी? फर्स्ट पॉइंट दोबारा बता दो, वो जो आपने बताया था अदर लो वाला, वो कैसे था? कैसे? जो अदर लो वाला बताया था ना आपने, ये फर्स्ट पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? हाँ। Okay. It provides special power to armed forces deployed in state or UT once it is declared disturbed under the provisions of the AFSPA. It means it is only under the Armed Forces Special Powers Act that a state can be declared disturbed. Right? There is no other law under which a state can be declared disturbed and armed forces special powers, armed forces can be deployed there in that state. Is it clear, Anjana? हाँ जी सर। Okay. So बेटा इससे पहले ये किसको इसका कंप्लीट आंसर आता था? Tell me. नहीं आता था सर। No sir, no idea was there. हाँ, so basically सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपको कहाँ हो सकती थी इसमें? ये सेकंड पॉइंट में आपको कंफ्यूजन रह सकती थी इसमें, राइट? यस सर। हाँ, मुझे लगता है कि सेकंड पॉइंट सभी को नहीं क्लियर हो सकता था इसका, राइट? एंड तीसरे पॉइंट में कंफ्यूजन रह सकती थी। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां आपको कंफ्यूजन रह सकती थी as far as my knowledge is concerned, right? So that is why ये जो चीजें हैं ये हम साइड बाय साइड ड्यूरिंग द लेक्चर करते हैं, राइट? सो दिस इज द थिंग दैट एक टॉपिक करते करते हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, राइट? सो ये है जो मेरी कोशिश रहती है अपनी क्लास के अंदर कि हम वैसा करें, राइट? सो हम अभी मणिपुर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट? अभी हमने मणिपुर का जो पॉलिटिकल सीन है थोड़ा अभी हमने उस पर बात की है। अभी हम पर्टिकुलरली एथनिक वायलेंस पे हम जाएंगे, राइट? सो दैट इज बेसिकली देयर, राइट? सो एज आई टोल्ड यू दैट मणिपुर remained under, right? Manipur remained under the AFSPA, right? From 1980, right? From 1980 till we can say 2004, right? And the armed forces, right, were the AFSPA was withdrawn from the state, right? Was withdrawn from the state in 2004. In 2004, after, right? In 2004, we can say after the rape of a woman, after the rape of a woman by members of
Assam rifles there, of Assam rifles there in the state, right? Assam rifles there. So 2004 में बेटा स्टेट में काफी डिस्टर्बेंस हुई थी. वहाँ जो असम राइफल्स के जवान थे उन्होंने किसी वुमेन के साथ रेप किया था और उसके बाद वहाँ की सोसाइटी ने, वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमें ये नहीं चाहिए, ये जो आपका लॉ है आप इसको हटा लो, विथड्रॉ कर लो, हमें यहाँ ये आर्म्ड फोर्सेस हैं जो वो नहीं चाहिए क्योंकि वो अपनी मनमानी करती है, वो अपनी पावर्स को मिसयूज करती है. So after that, to pacify the people of that state, this Armed Forces Special Powers Act was withdrawn from the state of Manipur, right? So that is the right. So the next important thing which I would like to tell you, which is the most probable question also. See, in today's lecture, right, there are 2-3 important questions so far which we have discussed from the preliminary point of view. One important question from the preliminary point of view which you can say we have discussed so far, that is the Armed Forces Special Powers Act. That is there which we have discussed, right? And second, which we have discussed, that is the political status, right? That is the political status, right, of Manipur, right, from independence till we can say today. These are the 2 important questions which are the probable questions from the point of view of this preliminary examination, right? So now beta, the next important thing which we are going to discuss about the state of Manipur, that is, we can say that Manipur is famous for, right, is famous for, we can say, Sangai. Sangai क्या है? That is brown, right? Sangai is brown. We can say antlered, A-N-T-L-E-R-E-D, brown antlered deer, heron, right? Antlered होता है an animal which have the horns. Okay, a deer with the horns, that is called the antlered deer, right? So संगाई antlered deer है, उसको local language में संगाई बोलते हैं, right? So बेटा the particular thing here is that this deer is found in Manipur, nowhere else. Is found in Manipur, right? So we can say that this is right. So we can say that beta, this is endemic to Manipur, means ये Manipur में ही है, and endangered also. ये question बहुत important है आपका. Endemic to Manipur, and we can say endangered also, right? And this animal is the state animal of Manipur, right? So Sangai is the state animal of Manipur. क्या आप सो रहे हो आज? No sir. हेलो. मुझे लगा कि perhaps you are sleeping today. नहीं, आप तो No sir, no. अच्छा नहीं सर, ठीक है. अभी इतनी जल्दी नींद नहीं आएगा. अच्छा ठीक है. So beta, Sangai is the state animal of Manipur. This is an important point which you should know, right? And दूसरी बात है, which is important here, that is we can say that which is important here, that is you can say Kabul Lamjao National Park. Kabul Lamjao National Park, right, in Loktak Lake. In Loktak Lake is the original habitat of a Sangai. ये यहाँ मिलता है.
original habitat of Sangai. It is found in this region, right? Habitat of Sangai, right? So beta, and one more important point here is that, right? You can say Kabul, uh, this Kabul Lamjau National Park is world's only floating national park. This is very much important here, right? कि Kabul Lamjau National Park is world's only floating national park. Is world's only floating national park. Right? So it is known for. The park is known for. Right? So the park is known for. The park is we can say known for floating, right? Floating marshy grasslands. Floating marshy grasslands, right? And these floating marshy grasslands are called fumdis. Fumdis is इनको वो fumdis बोलते हैं. PHUMDIS, right? Are called fumdis. So this is a very important, you can say, point here, right? And here we have talked about the Loktak Lake also. And related with this, one important point is that Loktak Lake is the largest freshwater lake of Northeast India. Okay, so Loktak Lake क्या हो गया? This is a freshwater lake, right? Is the largest freshwater lake of Northeast India. ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है. सो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट? लेक ऑफ फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. सो ये बेटा, ये जो 3-4 पॉइंट है ना, these are very much important for your preliminary examination. So one is that this Sangai, right? This question is most probable question, right? Second is Sangai is an endangered species. Third is Sangai is the state animal of Manipur, right? Third is Kabul Lamjau National Park, right? It is world's only floating national park. ये बहुत important facts हैं सभी, right? And right, so this is known as fumdis, right? Fumdis क्या होते हैं? Floating marshy grasslands होते हैं, right? Large chunks of the grass which keeps on floating, right? So that is there. And Kabul Lamjau National Park is found in Loktak Lake. Loktak Lake is the most famous lake of Manipur state, right? And apart from that, it is the largest freshwater lake of India. It is the largest freshwater lake of India, right? Okay, is it clear up to this point, beta? Right? Yes, sir. Yes, sir. So beta, Yes, sir, it is clear. so beta, ये जो Yes, जितने sir. पॉइंट्स है ना, इनमें से बेटा एक भी पॉइंट है जो वो मतलब मिस करने लायक नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? सो दैट इज व्हाई मैं आपको ये सब चीजें करवा रहा हूँ, ठीक है? सो बेटा इसमें ये हो गया, राइट? सो तीसरी चीज जो फिर आज मैंने आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई है यहाँ, राइट? सो वो बेटा हमारी बन गई है Kabul Lamjau National Park, Loktak Lake, Sangai, right? So these are the 2-3 further more important points which are there for the examination, right? So Kabul Lamjau National Park, right? Kabul Lamjau National Park जो हमने किया है. फिर हमने संगाई की बात की,
ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हमने लोकतक लेक की बात की है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इनमें से कोई भी चीज मिस नहीं करने वाली फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो ये है। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट which we will, you can say, take note of here. That is, we can say its capital, Manipur's capital, Imphal. ये तो सबको मालूम है इम्फाल है, right? Is surrounded by blue mountains. So this is also an important fact. Better, Manipur's capital Imphal is surrounded by blue mountains, right? So the next important point, next important fact which is here, that is, we can say major river basins in Manipur, right? Major river basins in Manipur. So that is again important thing. I will tell you why, right? Major river basins. So the first important river basin of Manipur region, that is, we can say Barak river basin, और इसको हम Barak Valley region भी कहते हैं. Yesterday also we right got a mention of this Barak Valley. Do you remember? Yes, sir. Okay. हाँ जी sir. Yes, yes. So beta, Barak Valley is the region of the Barak River, right? So this is found, right? Is found in the western region of Manipur. In the western region of Manipur, right? Western region of Manipur. क्योंकि बेटा देखो, ये बेटा एक कॉमन सेंस है, आप इसको एक गेस भी कर सकते हो, क्योंकि कल हमने क्या बात की थी कि जो बराक वैली है, राइट, जो बराक रिवर है, राइट, वो बराक वैली में कल हमने बात की थी कि असम के, सदर्न असम के 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, था ना, जहां पर बंगाली लोग रहते हैं, राइट, और उनको प्रॉब्लम थी 1961 में, उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे, कल हमने ये चीजें की थी, राइट। सो बेटा दैट इज व्हाई ये फिर वेस्टर्न साइड पे ही होगी, क्योंकि असम वेस्टर्न साइड पे है, राइट। ये बहुत सिंपल बात है, राइट। सर ये बराक रिवर अगे मेघना दी ट्राइब्यूटरी भी बन जाती है ना, आई थिंक बराक रिवर. यस बेटा, हम राइट. सो दिस इज देयर, बराक रिवर, इट इज देयर. सो द river has its origin. The river has its origin in Manipur, right? So ये जो river है, ये मणिपुर से निकलती है, right? It has its origin in Manipur and forms border between Assam and Manipur also. Forms border between Assam and Manipur, right? ये असम एंड मणिपुर के बीच में एक बॉर्डर बनाती है, right, between Assam and Manipur, right? So a part of this river is navigable. Part of this river is navigable, right? This river is navigable, right? National waterway number 6, right, has been projected here, projected for this place, right, for this river, right? So ये भी ध्यान में रखना बेटा, नेशनल वाटरवे 6 जो है वो बराक रिवर में है, right, projected for this river. So that is also important here, right? So the next step, better, this is an international river, right? So this river is an international river, is an international river. ये एक इंटरनेशनल रिवर है, बराक रिवर है, ठीक है. It runs through, right, runs through, we can say Manipur, Nagaland, right, runs through Manipur, Nagaland, Assam
and Mizoram, Assam and Mizoram, ये इन 4 स्टेट्स में से गुजरती है and enters into बांग्लादेश, राइट। फिर ये बांग्लादेश में एंटर होती है, राइट, और वहां से ये आगे फिर बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है, राइट। सो दिस इज अबाउट द बराक रिवर, राइट। सो इतनी चीज काफी है इसके लिए। सो बेटा फिर प्रिलिमिनरी के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया जो बराक रिवर वाला हो गया, क्योंकि बराक रिवर में से कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स निकल रहे हैं, राइट। सो बराक रिवर, राइट। सो पहली बात तो जो बराक रिवर वैली है वो असम के साउथ पार्ट में है एंड मणिपुर के वेस्टर्न पार्ट में है। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। सो बराक रिवर वैली is yes, I'm just writing here the question for your preliminary examination, right? So consider the following statements, right? And select the correct one, ठीक है। जितने आपको मैं क्विज देता था उतने तो आपको मैं यहाँ करवा दूंगा परमजीत। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। इवन कि ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਇਵਨ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। So this is the right. So now there is that the Barak Valley, right? Barak Valley is we can say inhabited by you can say right, we can say right, mighty people of Manipur, right, is primarily inhabited by mighty people of Manipur. Let's suppose ये आ जाता है is mainly inhabited by this, right, mighty people of Manipur. So one statement is this, let's suppose, right. So second statement, let us take that Barak River has its origin. Barak river has its origin in the state of Manipur. This is the second statement we can say, right. So national waterway number 6, right, has been projected or planned for, या falls in, ऐसा लिख लो, national waterway number 6 falls in Barak River, So this is the third statement we can say, right. And fourth statement we can say that Barak River is an international route, तो ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं, ये आपसे पूछी जा सकती है, राइट। सो इसके फिर फर्दर अगर हम कोड्स बनाते हैं, सो इसके कोड्स बन सकते हैं 1 ओनली, राइट। सेकंड इसका जो कोड है वो बन सकता है हमारे यहाँ, we can say 1 only, so that is 1 and 2 only, right? 1 and 2 only, and third can be there, right? The third code can be there, we can say 2, 3 and 4, 2, 3 and 4, and the next code can be the 1, 2, 3 and 4, right? 1, 2, 3 and 4. So ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। सर डी, सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन किसकी है? नवरीत, सिमरन की। ओके, सर सी। ओके, सी ऑप्शन। why one is not? Sir D, my answer is D. Those who have opted for C, I am asking that why one is not the correct statement.
So Metis people are in Arunachal Pradesh, I think. ਸਰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ ਓਵੇਰੀ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਹੈਬਿਟਡ ਹੈ ਬਰਾਕ ਵੈਲੀ। कौन पीपल है? ਸਰ OVERI। राइट, ओके। Sir Metis people Arunachal ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ? नहीं, मणिपुर दे ही है। We are going to Okay. discuss it. So it is true that C is the correct answer, D is not the correct answer, right? So it is true, right? So this is also an important question for you, this examination, right? So next, after this Barak Valley, the second is we will take that, that is we can say Manipuri River Valley, right? So Manipuri River Basin, we can say. Let me get it here. Manipuri River Basin, right? Manipuri River Basin, right? So it is this we can say this falls in the central plain region of Manipur. ये मणिपुर के सेंट्रल पार्ट में आता है, right? Central plain region of Manipur, right? So this region which I have marked blue here, right? So this is particularly about this Manipuri River Basin, right? Manipuri River Basin, right? So next I have it. This Manipuri River, right? Manipuri River is also an international river. An international river. An international river, right? So as also an international river, right? Which flows through Manipur and Myanmar. ये मणिपुर से सीधी म्यांमार चली जाती है, right? And falls into Bay of Bengal through the we can say Chindwin River, right? Where it enters through one of its tributaries, right? So ये चिंडविन रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, उसमें एंटर होती है, वो ट्रिब्यूटरी फिर इसको चिंडविन रिवर तक लेके जाती है, चिंडविन रिवर फिर इसको आगे बे ऑफ बंगाल तक लेके जाती है, राइट? सो ये जो रिवर है फिर ये मणिपुर एंड म्यांमार की रिवर है, जिसे हम मणिपुरी रिवर कहते हैं, राइट? सो ये आपको याद रखना है, ठीक है? सो ये भी एक इंटरनेशनल रिवर होगी आपकी, राइट? एंड इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दैट लोकतक लेक is in Manipuri River Basin, is in Manipuri River Basin, right? It's in Manipuri River Basin. ये इस Manipuri River Basin से, right? So बेटा 2-3 साल पहले ना एक क्वेश्चन पूछा था आपका यूपीएससी में कि बैरन आइलैंड वहां से पोर्ट ब्लेयर से कितनी दूर है, कितने किलोमीटर दूर है ना? वैसे तो वो एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन पूछ लिया, सो अब थोड़ा सा डर लगता है, सो दैट इज व्हाई मैं उसको भी कवर कर लेता हूँ। सो इट इज जो लोकतक लेक है, राइट? लोकतक लेक इज हार्डली 52 किलोमीटर, राइट? 52 किलोमीटर फार फ्रॉम इम्फाल, जो इसकी कैपिटल है, वहां से ये 52 किलोमीटर की दूरी पर है, and 123 kilometers away from India's international border with Myanmar. India's international border with Myanmar. So ये दो चीजें मैंने नोइंगली कवर कर ली है यहाँ पर, so that आपको
कल को दिक्कत ना आए अगर कुछ ऐसे, क्योंकि ये बेसिकली, चलो उसको तो हम छोड़ते हैं, ये बेसिकली टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ना, कि क्योंकि इतनी फेमस है लोकटक लेक, है ना, वर्ल्ड का जो ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो वो लोकटक लेक में है, के अंदर है ना, सो वहाँ टूरिस्ट बहुत जाते हैं। सो दैट इज व्हाई अगर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो यू मस्ट बी अवेयर दैट फ्रॉम विच पॉइंट इट विल बी द नियरेस्ट। ठीक है, आपको पहले कहाँ जाना पड़ेगा अगर आपको लोकटक लेक पर पहुंचना है? सो इम्फाल is the nearest station, right? Go to Imphal, and from Imphal you can take a taxi, you can hire a taxi, right? And you can reach the Loktak Lake. ठीक है, right? अगर छुट्टियां बताने कहीं कभी जाना होगा बाहर तो जरूर लोकतक लेक पे जाके आना, देख के आना लोकतक लेक, राइट? बहुत अच्छी है। So next the we can say third is that is the so Loktak Lake is in the central part, right? And next is the beta U River Basin. Why U River Basin, right? So as far as the this U River Basin is concerned, this is in the beta eastern part of Manipur. Right? Only these two rivers are more important, Barak and this Manipuri. The rest of the rivers are not important, right? So this is in the eastern part, you can say. And the next is we can say that is the Leni River Basin, Lanye, right? Leni River, the river basin, right? Leni River Basin. So as far as the Leni River Basin is concerned, this is in the northern part of the state. So these are the four important river basins in the state. Barak Valley here in this part, right? And आपका ये जो है मणिपुरी रिवर बेसन here in this part, right? And आपका जो है next जो हमने बात की थी, you can say, oh sorry, so बेटा ये जो हमारा नेक्स्ट था, जो हमने बात की थी, इसकी सेंट्रल पार्ट में है मणिपुरी रिवर बेसन है, एंड वेस्टर्न पार्ट में आपका ईस्टर्न पार्ट में आपका है यू रिवर बेसन है, एंड नॉर्दर्न पार्ट में आपका है लेनी रिवर बेसन, राइट? सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इन चीजों को नोट करना है, राइट? सो ब्राक वैली के साथ साथ फिर हमारी Manipuri river is also important, right, to for the examination purpose, for your examination purpose, right? So Manipuri river is also important, right? So this is also important. So beta rest of the students are not speaking at all today, okay? So beta, are you understanding my lecture or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, You're sir. doing. Yes, sir. Yeah. Okay beta. So that is Yes, sir. हाँ, so बेटा कहीं ऐसा ना हो ना कि at the end of the lecture you would say कि सर कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, तो फिर दिक्कत आ जाएगी. So this is there, this is about this, right? So we have discussed everything about this, right? So and one more important thing is that Manipur, you can say, right? इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ, neither sixth schedule, right? Sixth schedule and nor we can say inner line permit provisions are applicable on the state of Manipur. Right? ये हमने पहले भी किया था, स्टेट ऑफ मणिपुर. मुझे लगता है पता नहीं मैं किस कॉन्टेक्स्ट में मैं करवा रहा था. सर कल ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ yes maybe tomorrow, yesterday. So ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि मणिपुर में ये दोनों एप्लीकेबल नहीं होते, right? So this is also an important point, an important thing which is to be taken care of here, right? So the next important thing is now we will
come on the main point. That is the insurgency in Manipur. Right. The next point is insurgency in Manipur. Right. Insurgency in Manipur. Right. So insurgency in Manipur means the we can say violence in Manipur, disturbance in Manipur, riots in Manipur, right? So this is the disturbance in Manipur, we can see, right? Militancy in Manipur, right? So insurgency in Manipur. So first of all, we should be aware about this, that as far as the insurgency in the state of Manipur is concerned, there are two types of insurgencies in the Manipur, right? One in which the Manipur's Metis people are involved. Metis people are involved, right? जिसके अंदर मणिपुर के Metis people involved हैं, right? This is the one. And second is, we can say, where Nagas, Cookies, right? Chain cookies, chain cookies मैं आपको बाद में बताऊंगा, इनको chain भी कहते हैं, right? Cookies and we can say other, right? So ये आपका हो गया insurgency. ये दो पार्ट हो गए insurgency के. As we discussed yesterday, that insurgency in Manipur can be studied, you can say, in two, you can say, categories, by dividing it into two categories. One is by the Bodo people, right? And second is in the rest part of the Assam, which is due to the influx of the illegal immigrants into the state of Assam. Is it clear? So just like that, Metis people and Nagas, Cookies, and we can say the other people are there, right? So beta, as far as we can say the understanding of this insurgency problem, right? So first of all, let us understand that population profile of the state of Manipur. Population profile of Manipur, right? Of Manipur, right? So population of profile of Manipur में क्या है? भाई सब लोग जाग रहे हो, सो तो नहीं गए ना? जाग रहे हैं सर। नो सर। जाग रहे हो? अच्छा अच्छा। मुझे लगता है अंजना चली गई है ना छोड़ के। नहीं सर, यही। अच्छा. So population profile of Manipur. So as far as the population of profile of Manipur is concerned, one is the Metis people, right? Metis people, right? So second we will take care, that is the, we can say, Naga people, Nagas, right? And third, which we will take care, that is the Cookies, right? Cookies. And fourth, which we will take care, that is, we can say that is the other, right? Other, I will tell you who are others later, other, right? So this is, so as far as the Metis are concerned, right? 53.3%, let me write it approximately, 53% population of Manipur is constituted by the Metis people, according to 2011 census of the country, right? And as far as the Nagas are concerned, Nagas constitute approximately 24%, and Cookies constitute approximately 16%. Some people say 20% also, right? Say it 20% also. So this is the, and as far as the other group is concerned, right? So other group,
we can say that they constitute between 3 to, you can say, right, 7% of the population of the country. So ये बाकी जो रह गए हैं कि वो वाला ग्रुप है. So इस तरीके से हमें ये दिख रहा है कि मणिपुर is a state with the mighty majority people, right? मणिपुर के अंदर जो majority लोग हैं वो कौन है? mighty लोग हैं, right? mighty लोग हैं, जो majority लोग हैं मणिपुर के अंदर, मणिपुर state, right? And next is beta, as far as we can say, as far as scheduled tribe is concerned, right? As far as scheduled tribe is concerned, scheduled tribe, right? Population. So according to the 2011 census, right, 41% population of the country, of the state, right? So 41% population of state is, we can say, the tribal population, not scheduled tribe. It is the tribal population, you can say, right? Tribal population. And let me correct it so that so this is the tribal population. So tribal, right? Tribal population. This is the so one category, we can say total population में से ये tribal population है, right? And the next, if we say that 59% is the non-tribal population. 59%. ये कौन हो गए? These are the non-tribal people of the state of this, we can say, right? So इनको हम non-tribal लिख देते हैं. So ये non-tribal population है. So the population of Manipur can hence be divided into two categories, right? And now the next point is that more than 30, approximately 34, 35, right? Tribal groups are there. Tribal groups are there in Manipur. Tribal groups are there in Manipur. इतने लोग हैं जो मणिपुर में जो ट्राइबल लोग हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं ट्राइबल, are there in. So is it clear up to this point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So beta, now the next thing, to understand the insurgency in the state of Manipur. So first of all, it is important to know the population profile and about the major groups in the state, right? So as far as we can say, the Manipur population, you can say Manipur's population, yeah, Manipur's people, right, can be divided into three major ethnic groups, right? Three major ethnic groups. इनको हम तीन मेन एथनिक ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं. जो बाकी रह गए ऐसे तो कुछ रह ही जाएंगे जो अदर ग्रुप्स के होंगे, राइट? लेकिन तीन मेजर हैं जैसे हमने अभी बात की है. वन इज द माइटी पीपल, MAITE, right? Mighty. And the second is Nagas, right? And the third are Kukis. So they can be divided into these three: Nagas, and the third are, we can say, Kukis, right? So that is the third are Kukis, right? Kukis. So this is the mighty, Nagas, and Kukis. Is it clear up to this point, beta? So ये तीन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now, to understand properly the insurgency in the state of Manipur, we should first of all, you can say, know about these people, mighty, Kukis, and Nagas.
कि ये कौन है, right? As far as the Nagas is concerned, that I will not discuss today because that will be discussed in the Nagaland insurgency case, right? So we will discuss mighty and cookies and this, and along with that we will discuss the problem, that what is the problem and what are they demanding in action. Is it clear, beta? Is it okay? Right. So now, first of all, we will discuss about the mighty people here. Right, mighty. So MEITEI, mighty, mighty people. So as far as the mighty people are concerned, right? So इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? जो माइटी इंसर्जेंसी है वो क्या है, वो किस वजह से है माइटी इंसर्जेंसी है जो, that is the important thing, right? So first of all beta, let me discuss about this, you can say mighty people के बारे में, right? ये जो mighty people हैं, they are known as Manipuris also. इन लोगों को हम Manipuris भी कहते हैं. So they are known as Manipuris also, as Manipuris also. Right? They are known as Manipuris also. They speak Manipuri, right? Which is a language recognized, or we can say, right, recognized under 8th schedule of constitution. 8th schedule of constitution, आपको मालूम है ना, it is there. हाँ जी सर. Yes, 8th schedule of constitution, right? And it was added to the schedule by 72nd amendment. The 72nd amendment in 1992. Okay. So 1992 में 71st amendment, 72nd is wrong, right? By 71st amendment in 1992. So इसको add किया गया था by 71st amendment in 1992, right? And we can say they are a separate ethnic group. They are a separate ethnic group, and so far, right? So far, they have not been tagged as, we can say, ST. अब तक उनको scheduled tribe status नहीं मिला है. They are not scheduled tribes, right? So examination में ये भी statement आ सकती है कि mighty people are the largest scheduled caste, ठीक है? Largest scheduled tribes community of the Manipur state. So ये गलत statement होगी अगर ऐसी statement पूछी जाती है, because वो अभी तक scheduled tribes नहीं है, right? So उनको अभी तक declare नहीं किया गया है scheduled tribes. Okay बेटा? So now we will see that इन लोगों की actual problem क्या है. So अब हम उस पे आते हैं. तो mighty insurgency पे आएंगे अब हम, right? Mighty insurgency. So as far as the mighty insurgency is concerned, beta, there are two prominent regions of mighty insurgency in the state. The two prominent reasons, right? So the one prominent reason is because they are the majority group in the state, right? So, but decline of their socio-economic, right? Socio-economic influence, right? Socio-economic influence after the
after the tribal people, right? After the scheduled tribe people, ये लिखेंगे, after the scheduled tribe people, right? After the scheduled tribe people, right, came on forefront due to reservation, right? Due to reservation. So this is the one prominent reason that why the mighty people are not happy, why they are not feeling satisfied, right? What is the problem to them? So वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम मेजॉरिटी में थे इस स्टेट में और हम रूल भी करते रहे हैं, हमारी स्टेट भी है ये, लेकिन आज क्या हो गया आज़ादी के बाद, इस स्टेट के अंदर जो माइनॉरिटी ग्रुप थे, जैसे कुकीज थे, नागास थे या और ग्रुप थे और 5 ग्रुप हैं, उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करके गवर्नमेंट ने उनको रिजर्वेशन दे दी और उनको रिजर्वेशन देने की वजह से वो लोग इनसे बेटर हो गए, माइटी पीपल्स, राइट? सोशली एंड इकोनॉमिकली दे आर better, right? And psychologically or emotionally they feel, right? They feel that they have been lost to the tribal completely. They feel that they have been lost to the tribals completely. देखिए, है ना, उन्होंने तो हमें मार ही दिया, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, है ना, दे हैव बीन लॉस्ट टू द ट्राइबल कंप्लीटली, राइट? जैसे पंजाब में बेटा जब बिहार से लेबर आने लगी थी तो पंजाब की जो लेबर क्लास थी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी बिहार की लेबर से, राइट? वो कहते थे कि हम तो फ्री कर दिए इन लोगों ने, ये कम पैसों पे काम पे चले जाते हैं और दैट इज वाई हमें कोई काम पे लेके जाने को रेडी नहीं है। सो ऐसी चीज रहती है। सो इवन क्या है बेटा कि आज की डेट में, राइट, even the DGP of the state is a tribal, right? DGP of the state is a tribal. कहते हैं कि राइट, हमारी जो प्रतिष्ठा है वो कहाँ गई, हमारी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, राइट, वो किधर गई, है ना? सो one is that decline of their socio-economic influence after the scheduled tribe people came on forefront due to the reservation. So that is the main reason, that is the main problem, right? So बेटा आज की डेट में क्या है वहां अगर हम देखते हैं, पहले मैं यही पॉइंट डिस्कस करता हूं। आज की डेट में क्या है बेटा कि माइटी लोग हैं जो वो पूरी स्टेट का 53.3% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एज पर द 2011 सेंसस। इज इट क्लियर, राइट? एंड बेटा दे आर मेनली कंसेंट्रेटेड टू, वी कैन से दिस रीजन, वो ये जो ओवल रीजन मैंने बनाया है ब्लू वाला, दे आर मेनली कंसेंट्रेटेड टू दिस रीजन, राइट? एंड बेटा दिस रीजन जो है, दिस रीजन इज वेरी स्मॉल रीजन इन द स्टेट, ज्योग्राफिकली दिस इज वेरी स्मॉल रीजन, आपको दिख ही रहा है ना, एरिया इज वेरी स्मॉल, राइट? सो ज्योग्राफिकली इट्स अ वेरी स्मॉल रीजन, इट्स ए वेरी स्मॉल रीजन, ज्योग्राफिकली बहुत छोटा रीजन है, राइट? अगर हम पूरी बात करें तो टोटल जो मणिपुर का है दैट इज 22,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बनता है, राइट? और उसमें से ये जो
मणिपुर वैली रीजन है जो सेंट्रल पार्ट है, जो जिसकी हम ये ब्लू ओवल है, राइट। सो ये वाला जो पार्ट है ब्लू ओवल वाला, दिस इज ओनली 1840 स्क्वायर किलोमीटर. So it means less than 10%, right? अगर हम एरिया की बात करते हैं, so area is less than 10%, right? And the population, right? The population living there is more than 60% of the total population of Manipur. 60% of the total population of Manipur, right? 60% of total population of Manipur. And this region is we can say is dominated by meaty people. इस region में meaty लोग रहते हैं, meaties, right? Meaties. It means क्या है कि पहले तो ये जो एरिया है ये पूरी स्टेट का लेस देन 10% है, उसमें से मोर देन 60% पॉपुलेशन रहती है स्टेट की, और इस मोर देन 60% में से यू कैन से 66% पीपल हैं जो दोज आर द मीटी पीपल, राइट, दोज आर द मीटी पीपल. सो बेटा इट मीन्स क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई है, right? Due to such a high population density in this region where the meaty people are mainly concentrated, so it means there will be lack of opportunities, there will be lack of resources, right? There will be lack of land, and there will be low per capita output, right? So यहाँ बेरोजगारी भी होगी, right? So that is why ये जो मीठी लोग हैं इस वजह से भी वो सोशली एंड इकोनॉमिकली पीछे रह गए हैं. कुकीज जो बैठे हैं वो रेस्ट ऑफ द स्टेट में बैठे हैं, नागाज रेस्ट ऑफ द स्टेट में बैठे हैं, कुछ और 5-6 ट्राइब्स हैं आगे बात करते हैं वो भी रेस्ट ऑफ द स्टेट में बैठे हैं, कुछ यहाँ भी बैठे हैं. सो इट मीन्स वो लोग जो रेस्ट ऑफ द स्टेट के अंदर बैठे हैं, सो वो लोग ऑब्वियसली इकोनॉमिकली बेटर होंगे क्योंकि उनके पास एरिया बहुत है, ये बहुत स्मॉल एरिया में बैठे हैं, राइट. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कम है, मोर ओवर ये बॉर्डर स्टेट है, यहाँ कौन जाके पैसा इन्वेस्ट करेगा, यहाँ टाटा नहीं करेगा, नीरव मोदी नहीं करेगा, अंबानी नहीं करेगा. सो दैट इज वाई यहाँ जो यू कैन से जो स्कोप है वो बहुत कम है, राइट. सो दैट इज वाई दीज पीपल आर, यू कैन से these people have been left behind. Okay, so this is the one main reason that why they feel dissatisfied, while they are not feeling happy, right? Why they have the problem, why they have the issue, one or the other issue, right? So beta यहाँ हमने क्या डिस्कस कर लिया था कि सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एक इनका ये कारण है, ठीक है. सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ये एक बड़ा कारण हो गया है इसके पीछे कि ये सब क्यों है मीठी इंसर्जेंसी का. और मीठी इंसर्जेंसी का जो एक दूसरा बड़ा कारण है बेटा, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक दूसरा बड़ा कारण इसमें आएगा, राइट. सो उसमें ये है बेटा कि इसके अंदर बेटा क्या है, that is that we can say some people of the state, some meaty people, right, are not, we can say a section of meaty people, right, mighty people are not happy or satisfied, right, satisfied over the
right, satisfied over the Manipur's merger with India, over the Manipur's merger with India, right, with India. ये बेटा सेम जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड जम्मू एंड कश्मीर लगता है मुझे, है ना। वहां भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था, वहां भी कुछ वैसा ही हुआ था। वहां भी लोग कहते हैं कि हमारे राजे ने कर दिया, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, है ना। सो सेम प्रॉब्लम बेटा यहाँ है। यहाँ बेटा क्या है कि the people are saying that consensus was not developed before the merger of Manipur into India, right? Consensus was not developed. वो कहते किसी ने पूछा ही नहीं हमसे। Consensus was not developed before the merger of Manipur into India, right? वो कहते एक राजा था, है ना, बुद्ध चंद्रा, उसने उठ के एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, कह दिया कि मणिपुर भारत का हो गया। किसी ने मणिपुरी से को तो पूछे ही, राइट। सो दैट मीन्स therefore merger itself, Manipur's merger itself into India is disputed, right? So merger is disputed, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में मर्जर डिस्प्यूटेड है, राइट। सो बेटा अगर आपको कल को बेटा मेंस एग्जामिनेशन में अगर बेटा ये क्वेश्चन पूछता है, राइट, कि डू यू थिंक देयर इज अगर आपको बेटा ये क्वेश्चन पूछता है कि डू यू थिंक देयर इज a similarity, right? There is a similarity in the insurgency, right? In the insurgency in Jammu and Kashmir and Manipur, in Jammu and Kashmir and Manipur. अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता है, राइट, एंड मणिपुर डिस्कस, आप इस चीज को कहते हैं डिस्कस करो, बताओ कि क्या कुछ ऐसा है, सच में है ऐसा कुछ, है ना, आपको लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है एंड मणिपुर, राइट। सो ये अगर आपसे पूछता है, राइट, डिस्कस क्या डिस्कस, तो इसमें बेटा आपने कुछ सिमिलरिटी तो है, जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाली सिमिलरिटी है। जम्मू एंड कश्मीर में भी राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था, और मणिपुर में भी द किंग हैज एंटर्ड इनटू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड द स्टेट हैज बीन हैंडेड ओवर टू इंडिया, राइट, एंड नो कंसेंसस वाज डेवलप्ड among the population of the state, right? So the same cases with the Jammu and Kashmir, the people there are also saying that the Raja Maharaja Hari Singh, right, never asked from us that whether they want to go with Pakistan, remain independent, or they want to go with India. So वही प्रॉब्लम वहाँ है, थोड़ी बहुत वही प्रॉब्लम है। मर्जर से डिससेटिस्फैक्शन है, उधर भी मर्जर से डिससेटिस्फैक्शन है, राइट। उधर कश्मीर के लोगों को इंस्टिगेट पाकिस्तान कर रहा है, मणिपुर के लोगों को इंस्टिगेट चाइना कर रहा है, राइट। सो चाइना इनको सपोर्ट देता रहा है, राइट, उनको चाइना कर रहा है, राइट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से बात शुरू होती है, राइट, और बात आगे बढ़ती है, राइट। सो वहाँ ये तो बेटा सिमिलरिटी है, राइट, बट कुछ डिसिमिलरिटी है, क्योंकि मणिपुर में एक एथनिक डाइवर्सिटी है, राइट। उस ड्यू टू दैट एथनिक डाइवर्सिटी देयर आर द एथनिक riots, ethnic violence incidents which we see happening in the Manipur, right? That is particularly between the Kukis and Nagas. And this is entirely different story from the state of you can say Jammu and Kashmir, right? So आपने बेटा इस कॉन्टेक्स्ट में आपने ये मेंस के लिए क्वेश्चन बनाना है, लिखना है,
तो मुझे लगता है कि शायद आप बहुत सिंसियरली इसको लिखोगे, ठीक है। बेटा आप एक एक नोटबुक लगा लो, सेपरेट रजिस्टर लगा लो, है ना। या बेटा क्या है, आप नेट पे जाओ, नेट पे आप सर्च करो, ठीक है। वहां आपको मिलेगा बेटा कि यूपीएससी आंसर शीट्स के लिए आपको पेपर मिलते हैं, राइट। वो बेटा वैसे ही वो बेटा प्लेन होते हैं, उसके ऊपर मार्जिन छोड़ा होता है, लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन, सो राइट, एंड उस मार्जिन के अंदर आपने फिर लिखना होता है। सो बेटा आप वो वाले मंगवा लो, राइट। सो उस पे आप क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख के बेटा उसको आप फाइल में लगा लो, और क्वेश्चन से पहले आप उसका वो जो ब्रीफ स्केच बनाओ, और जब आप मेंस एग्जामिनेशन लिखने जाओगे तो जस्ट आप उन क्वेश्चंस के मतलब के थ्रू हो जाना एक बार, और जो आपने वो उसका स्केच बनाया हुआ है फ्रंट पे, है ना, कि मैंने इसमें करना क्या है, बस उसको देख कर चले जाओ, और आपका मेंस का मतलब आपको वो काफी सपोर्ट करेगा, ठीक है। आज आपके ऊपर प्रेशर नहीं है क्योंकि अभी एग्जामिनेशन दूर है, राइट। जब एग्जामिनेशन नजदीक आ जाएगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, ये पेज आपके बिखर जाएंगे, है ना, कुछ पेजेस आपके बच्चे इधर उधर कर देंगे, है ना, ठीक है। तो कुछ पेजेस हम रद्दी में बेच देंगे तो फिर वो मिलेंगे नहीं, या कुछ कहीं इधर उधर दब जाएंगे आपकी किताबों के नीचे। सो दैट इज वाई इसके फोल्डर बना लो, ब्यूटीफुल फोल्डर बना लो, रखो। ये बेटा ये आपकी कमाई है जिंदगी की इस पीरियड की, ठीक है। सो कोई भी पर्सन अपनी कमाई को ऐसे नहीं फेंकना चाहता, सो आप भी ऐसे नहीं फेंकोगे, राइट। सो आज ठीक है, आज भला ये आज भले ये पेपर आपके मतलब 1 रुपए किलो बिकेंगे, राइट। और लेकिन जिस दिन आप IAS या PCS ऑफिसर बन गए तो फिर आपको इन पेजेस की अहमियत पता चलेगी कि इन पेजेस की क्या वैल्यू है मेरे लिए, ठीक है। आज आपके लिए ये पेजेस रद्दी हैं, कुछ भी नहीं है, राइट। सो आने वाले दिनों में आपको ये महसूस होगा। सो तभी मेरी ये सभी को राय है, अंजना को, अपना निशांत को, है ना, और सिमरन को, नवरीत को, सिमरन को, परमजीत को, किरण को, राइट, कमल को, ये मेरी सभी को है राय, सजेशन है कि आप जरूर लिखा करो, गलत लिख लो, थोड़ा लिख लो, है ना, ऊट पटांग लिख लो, कोई बात नहीं, ऊट पटांग से ही धीरे धीरे ठीक होगा, है ना। याद करो कि जब पहले दिन आपने, ठीक है, कूड़ा लिखा होगा अपनी कॉपी पे तो वो कैसा, है ना, और जब आप आज लिखते हो तो वो कैसा, है ना। सो अगर आप पहले दिन ही उसको ना लिखने की आप कोशिश करते कि नहीं मुझे तो लिखना नहीं आता, है ना, ये तो देखो अच्छा नहीं लगता, है ना, मेरे टीचर ने कितना सुंदर लिखा है ना, और मैंने मतलब कितना गंदा लिखा है, तो इसलिए मतलब ये काम मैं नहीं करूँगा, है ना। तो फिर आज आप यहाँ तक ना पहुंच पाते हैं। सो गलतियां करते हो, गिरते हो, संभलते हो, है ना, तो सीखते हो, आगे बढ़ते हो, है ना। सो इम्प्रूवमेंट होती है। सो फिर आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, फिर आप वहां जाके फिर आप सीखते हो, गलतियां करते हो, आगे बढ़ते हो। सो ऐसे बेटा एक एक स्टेप बढ़ते हुए, ठीक है, हम जहाँ हैं आज, ठीक है, हम वहां पहुंचे हैं, ठीक है। और बेटा आज हमने मतलब यहाँ से और आगे बढ़ना है ना। सो आज आप आज की एज के मुताबिक आज आप गलतियां करोगे, है ना, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए वो भी एक आपके लिए एक नया सफर है ना। सो वो बेटा उस नए सफर के मुताबिक आपकी आज की ही गलतियां होगी, है ना। सो उन गलतियों को आप एक्सेप्ट करोगे, वो गलतियां करोगे आप, उनको संभालोगे, है ना, उनको अपनी यादाश्त बनाओगे, और फिर उनसे सीखोगे, और फिर आप आगे बढ़ोगे, और वो आपकी जिंदगी की पूंजी है, वो गलतियां नहीं, ठीक है। सो एटीट्यूड ही बदलना है, गलतियां नहीं है, वो हमारी जिंदगी की एक कमाई है ना, और उन्हीं गलतियों की वजह से, है ना, आज हम यहाँ पहुंचे हैं, राइट। अगर हम पहले दिन से गलतियां नहीं करते तो हम यहाँ पहुंच ना पाते, ठीक है। अगर हम बेड के ऊपर ही बैठे रहते जब हम छोटे थे, है ना, कि नहीं चलेंगे तो गिरेंगे, चोट लगेगी, है ना, तो परहैप्स आज आप चल फिर ना सकते, आज आप ड्यूटी पे ना जा पाते, है ना, आज आप उसी बेड पे होते,
है ना, गलतियां की, गिरे, चोट भी खाई, है ना, रोए भी, है ना, ठीक है, सीखा भी, है ना। तो कभी कभी आपने छोटी एज में, ठीक है, अपनी जान को भी रिस्क में डाला होगा, है ना, ठीक है, मतलब गर्म पानी में हाथ डाला होगा, ठीक है, या मतलब कुछ और ऐसी गलतियां की होगी, है ना। सो वो आपने आपने अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाला होगा, है ना। तो बेटा उसी वजह से मतलब, ठीक है, आज आप यहाँ हो, है ना, आज आप चल फिर सकते हो, आप अपना इंडिपेंडेंट हो, है ना, आप जॉब करते हो, आप बाजारों में घूमते हो, आप कॉलेज गए, आप यूनिवर्सिटीज में गए, आप स्कूल्स में गए, है ना। अगर आप वो गलती ना करते कि नहीं उठेंगे तो गिरेंगे, है ना, बस वो एक ही बात थी, है ना, तो वही एक बात आज आपको कितना पीछे ले जाती है। तो वही बेटा आज अब आपको सोचने की जरूरत है ना, ठीक है, कि नहीं, है ना, लिखेंगे तो मजाक उड़ेगा, है ना, आज आपके माइंड में ही है ना, ठीक है, सर से डिस्कस करेंगे तो मजाक उड़ेगा, है ना, बाकी बोलेंगे कि आपको तो ये भी नहीं पता, है ना, ठीक है। सो जो लोग यही सोच के बैठ जाते हैं, सो वो लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट इज वाई गलतियां करो, ठीक है, इंसान गलतियां करने के लिए ही बना है, ठीक है, लेकिन हर गलती डिफरेंट किस्म की, ठीक है, वही गलती रिपीट नहीं होती, बस इतनी बात होती है, ठीक है। गलतियां करोगे तो सीखोगे, आगे बढ़ोगे, राइट। सो एक गलती बहुत कुछ सिखा जाती है, राइट, और वो तो हो गई, गलतियां तो हो गई, ठीक है। सो चलो, सो सो ये आपने ट्राई करना है बेटा, राइट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट the meaty insurgency, so as well as the mighty insurgency is concerned, so merger is disputed. We have discussed this, right? Merger is we can say disputed, right? So this is one of the reasons that why mighty people are not satisfied, why are they not happy, right? Why they feel that they have been betrayed by their king, right? They were not consulted before he took the decision, right, to merge the Manipur state, to merge their land with India, right? So this is one reason, right? So now beta, the important thing is that what they want at present, what they want at present, ठीक है, बहुत कुछ करते हैं, वायलेंस करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बट वो चाहते क्या है आफ्टर ऑल आज, है ना, आज, क्योंकि आज तो हम जम्मू कश्मीर भी नहीं छोड़ने को तैयार, हम छोड़ेंगे भी नहीं, और मणिपुर को हम कैसे छोड़ेंगे, है ना। सो आज वो क्या चाहते हैं, आज की डेट में बेटा जो इश्यूज चल रहे हैं, एक इशू तो ये है बेटा कि कुछ लोग चाहते हैं कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दे दो, हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब बना दो, राइट, सो दैट हमें भी बेनिफिट मिले, और हम जो सोशली इकोनॉमिकली पीछे रह गए, हम भी थोड़ा आगे बढ़े। एक तो बेटा ये प्रॉब्लम है, राइट। एंड दूसरी चीज बेटा क्या है, दे वांट प्रोटेक्शन, दे वांट प्रोटेक्शन फ्रॉम infiltration into the state। वो कहते कि लोग आते हैं हमारी स्टेट में, आके बैठ जाते हैं, है ना, और जब बेटा लोगों की बात होती है, पता क्या है बेटा, लोग आते हैं, बोडोज आए, सॉरी कुकीज आए, नागास आए, है ना, कुकीज में आपको बताऊंगा करीब 200 साल पहले आए थे मणिपुर में, और उसके बाद भी लोग आते रहते, है ना, आते रहते हैं। सो जब बेटा लोग आते हैं तो बेटा वो सब रश करते हैं किधर, इस सेंट्रल रीजन की तरफ। क्यों? क्योंकि ये वैली रीजन है, ये फर्टाइल है, यहाँ एग्रीकल्चर का स्कोप है, पत्थर है ना, फर्टाइल है, प्लेन है, राइट, और दूसरा हिली टेरेन है। सो हिली टेरेन में लाइफ डिफिकल्ट होती है, यहाँ लाइफ इजी है, तो उनका एरिया है जो वो प्रेशर में रहा है, राइट। सो वो कुछ प्रोटेक्शन चाहते हैं, प्रोटेक्शन
में जब बेटा प्रोटेक्शन की बात आती है तो वो बेटा कैसी प्रोटेक्शन चाहते हैं, वो कहते हैं कि सम यू कैन से इनर लाइन परमिट टाइप अरेंजमेंट शुड बी देयर, सम इनर लाइन परमिट टाइप अरेंजमेंट शुड बी देयर। जैसे आप दूसरी स्टेट में इनर लाइन परमिट का है, राइट, इनर लाइन परमिट लाइक स्टेट लाइक, राइट, अरेंजमेंट should be there, arrangement should be there, okay। सो वो कहते हैं कि कुछ ऐसा कर दो, हमें इनर लाइन परमिट जैसा कुछ अरेंजमेंट हमें भी करके दे दो, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि थोड़ा है ना हमारी भी थोड़ी प्रोटेक्शन हो, ठीक है, जो इन्फिल्ट्रेशन है उनसे हम भी बच पाए। सो ये चाहती हैं। सो इस चीज को लेकर के बेटा इनर लाइन परमिट लाइक अरेंजमेंट को लेकर के पीछे a bill was introduced into the legislative assembly of Manipur, right? A bill was introduced into the legislative assembly of Manipur. मणिपुर की विधानसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। सो इस चीज के ऊपर वर्क करने के लिए कि हम यहाँ कोई इनर लाइन परमिट जैसा कुछ अरेंजमेंट बना दें, सो दैट जो माइटी पीपल की जो एक फीलिंग है कि हमें इनफिल्ट्रेशन से खतरा रहता है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हम उसको एटलीस्ट एड्रेस करनी, राइट। सो बेटा जब वो बात बनी तो वो क्या हुआ, तो वो बेटा प्रोटेस्ट हुए कंट्री में, सॉरी मणिपुर में, राइट। सो दैट वाज वेलकम्ड बाय द प्रोटेस्ट्स इन द स्टेट, राइट। एंड व्हेन द बिल पास्ड बाय द Manipur State Assembly, right, was sent to the president, because ये एक ऐसा बिल है जो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो गवर्नर नहीं कर सकता उठी, right। So when that was sent to the president of India, the president of India declined to give his assent to that bill, right, in the backdrop of the protests in the state। वो कहते कि ये तो एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी स्टेट में, राइट। सो वो प्रेसिडेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इज इट ओके, इज इट ओके? सो नाउ यस सर, यस सर, yes, so now beta in the state of Manipur there is a coalition government in which a BJP is also a partner in the state, right? So now again, there is proposal to bring a bill in the legislative assembly of the Manipur state, right? Right. So where according to the bill, right, the free movement of outsiders who entered into Manipur after 1951, right, that shall be restricted according to that bill। अब फिर जो बीजेपी की कोलिशन गवर्नमेंट है मणिपुर में, वो दोबारा एक बिल लाने की कोशिश में है कि हम एक ऐसा बिल लाएंगे माइटी पीपल की फेवर में, सो दैट उसमें क्या होगा कि 1951 के बाद जो लोग मणिपुर में एंटर हुए हैं उन लोगों की जो फ्री मूवमेंट है स्टेट में, उसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई जाए। सो अभी ये बिल आना है, देखते हैं इस बिल को क्या रिस्पांस मिलता है, क्या इस बिल को प्रेसिडेंट पास करता है नहीं करता, एक्सेप्ट करता है नहीं करता। सो टाइम विल टेल, राइट। एंड द नेक्स्ट थर्ड इशू which they are presently facing, right, or there we can say third demand, okay, third demand, the third demand is that beta, right। So Manipuri students, we can say students of Manipur, let us say students of Manipur are against, right, saffronization in Manipur,
राइट। सेफरनाइजेशन आप बात समझ गए होंगे, नामकरण करना जैसे पूरी कंट्री में हो रहा है, राइट। सो बेटा पिछले दिनों में मणिपुर स्टेट के अंदर जो मणिपुर यूनिवर्सिटी है, मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हटाने की डिमांड रेज हुई थी स्टूडेंट्स की तरफ से। वो क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स वर सेइंग दैट द वाइस चांसलर ऑफ द मणिपुर यूनिवर्सिटी इज सैफरनाइजिंग द यूनिवर्सिटी, राइट। वो यूनिवर्सिटी में आरएसएस का जो कल्चर है उसको इंट्रोड्यूस कर रखा है, राइट। सो सैफरनाइजेशन हो रही है यूनिवर्सिटी में, सो दैट इज वाई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हटा दिया जाए। सो ये एक नई प्रॉब्लम है जो नए टाइम में आकर के इमर्ज हुई है। सो दिस इज द डिमांड ऑफ द माइटी पीपल, दिस इज व्हाट द माइटी पीपल डिमांड टुडे। आई थिंक this is clear, right, to you up to this point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next is beta cookie people, right? About the cookies. Next is about cookies, cookie people, right? Cookie people. So as far as the cookie people is concerned, right? As far as the cookie people is concerned, right? So हमें देखना पड़ेगा कि ये कुकी लोग कौन हैं। As I have already told you that cookies entered into Manipur about 200 years back, right, from Myanmar. तब बर्मा था ये, है ना, तो सो बर्मा से एंटर हुए थे, right. You must be knowing there is a Chin province in Burma. म्यांमार में एक चिन प्रोविंस है, सुना है आपने किसी ने? There is a Chin province in Myanmar, right? So these are the people belonging to that province, right? These are the people belonging to, right, belonging to that province. ये वो लोग हैं जो उस प्रोविंस को बिलोंग करते हैं, right? Those who are called chins there, are called cookies in Manipur, right? Are called cookies in Manipur. तो पहली बात तो ये है बेटा, आपको ये मालूम हो गया कि कुकीज कौन है, राइट। सो कुकीज को हम चिन कुकीज क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये कुकीज चिन क्यों बोलते हैं, ये पहली बात है जो आपको मालूम होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज थिंग, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज बेटा कुकीज आर एन एथनिक ग्रुप, कुकीज आर एन एथनिक ग्रुप। तो ये जो कुकीज हैं दे आर एन एथनिक ग्रुप, cookies are an ethnic group, right? They are found in कहाँ मिलते हैं, ये वो मैं आपको लिख देता हूँ, असम, मणिपुर, नागालैंड, राइट, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, Meghalaya and Tripura. It means all the northeastern states except Arunachal Pradesh. इसको याद रखना बहुत easy, right? Except Arunachal Pradesh, right? So and Myanmar also, वहाँ से तो आए ही हैं ये लोग, वहाँ तो हो गई होंगी। So these people are found here, right? So in areas में ये लोग पाए जाते हैं, in areas में ये लोग मिलते हैं, right? So beta, as we have already discussed that in Myanmar state they constitute about
right, in Myanmar. In Myanmar, they constitute about 1/5 of the total population. 1/5 of the total population, right? So वो total population का approximately 1/5 population है जो उनकी है, राइट। सो अब बेटा ये तो हमने थोड़ा सा कुकीज के बारे में किया है, राइट। सो अब हम करते हैं कि कुकीज का प्रॉब्लम क्या है यहाँ स्टेट में, है ना, वो क्यों थोड़ा वायलेंस पे है, राइट। सो अब हम देखेंगे कुकी इंसर्जेंसी। कुकीज की प्रॉब्लम क्या है इन द स्टेट, राइट। कुकी इंसर्जेंसी, अंजना, हम एक दिन क्लास मिस करने के लिए हम जुर्माना करते हैं 100 रुपीज। सो वो कॉमन किटी में जाता है और आपका देख लो आपका जुर्माना कितना हो गया है। मुझे लगता है आपकी 1 मंथ की सैलरी तो बनी गई। सर सही बात ज्यादा बन गई होगी सर। ज्यादा होगी, ठीक है, चलो फिर तो आप ईमानदार हो। चलो फिर आपको छोड़ दिया जुर्माना, ठीक है, क्योंकि आप ईमानदार, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, so beta, as far as the cookie insurgency is concerned, it is important to note here that there are 2 types of problems of cookies, right? One is they feel that they are inadequately represented in the legislative assembly of the state. वो कहते कि हमें रिप्रेजेंटेशन कम है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, हमें सीट्स कम मिली हैं, हमें और सीट्स चाहिए। ओके, सो ये उनकी प्रॉब्लम है। सो ये प्रॉब्लम बेटा फिर क्या है, अगर हम देखते हैं बेटा, जो मणिपुर का जो लेजिस्लेचर है दैट इज ए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल मींस वहाँ एक ही सदन है, दैट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। सो मणिपुर हैज a unicameral legislature. Right? Unicameral legislature means that Manipur has legislative assembly only. Right? And the legislative assembly of Manipur is a 60-member house. Right, is a 60-member house. इसमें इसके 60 मेंबर्स हैं बेटा, राइट। और बेटा वो कहते हैं कि इस 60-member हाउस में, राइट, जो माइटी डोमिनेटेड रीजन है, हैज 40 सीट्स, उनके लिए 40 सीट्स है, राइट। वो कहते कि हम जो रेस्ट ऑफ द स्टेट पूरी है, जहाँ नागास भी हैं, कुकीज भी हैं और भी हैं, राइट। सो उनके लिए, राइट, वो कहते कि 20 सीट्स, ओनली 20 सीट्स आर लेफ्ट, ओनली 20 सीट्स आर गिवन to the region, right, given to the region dominated by cookies and Nagas, right। वो कहते कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, कहते कि जो तो माइटी पीपल हैं, जिस एरिया को वो डोमिनेट करते हैं, उनको तो आपने दे दी है 40 सीट्स असेंबली में, उस एरिया की रिप्रेजेंटेशन इतनी है, और जहां वो कहते हैं कि हम लोग बैठे हैं कुकीज एंड नागास, वहाँ जो रिप्रेजेंटेशन है वो खाली आपने हमें 20 सीट्स की ही रिप्रेजेंटेशन दी है। सो दैट इज वाई वो कहते हैं कि ये जो है ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है।
एंड दूसरी बात वो कहते हैं कि जो नागास एंड कुकीज हैं together they constitute about 45% population of the state, right? They constitute about 45% population of the state. So that is why वो कहते हैं कि हमें proportional representation तो मिलनी चाहिए, हमें proportional representation ही नहीं मिली, right? हमें proportional representation ही नहीं मिली, right? So अब क्या है बेटा, अब approximately 16-17 जो कुकी आउटफिट्स हैं, कुकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, they have started demanding a separate state also for the Kuki people. आप उसको कुकी लैंड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, right? So they are demanding separate state for Kuki people. Is it clear up to this point? Right? And yes sir. and दूसरी बात इनकी बेटा क्या है, अभी मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, थोड़ा सा बेटा एक साइकोलॉजिकल इशू है कुकीज का, सॉरी साइकोलॉजिकल नहीं, हम उसको इमोशनल इश्यूज कहेंगे, साइकोलॉजिकल एक अजीब सी टर्म लगती है, ठीक है, थोड़ा सा एक उनका बेटा इमोशनल इशू है, राइट? इमोशनल इशू क्या है कुकीज का, राइट? वो एज फार एज द इमोशनल इशू इज कंसर्न्ड, उसको लेकर के कुकीज कहते हैं इमोशनल इशू, राइट? इमोशनल इशू ये है बेटा कि इन 19 वी कैन से 1917 to 19 period cookies fought against the colonial means British rule, right? For the protection of their land, अपनी लैंड की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने फाइट की, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, राइट? एंड देन बेटा ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू also instead of supporting the British, they joined the Indian National Army, right? They joined the Indian National Army, right? So that is why they cookies feel that they have played an important role, right? Cookies feel that they feel that they have played an important role in overthrowing right? Overthrowing the British from India, right? But in independent India, their contribution has never been acknowledged. Okay? But in independent India, right? Their contribution has never been acknowledged. उनकी contribution को कभी acknowledge नहीं किया गया, has never been acknowledged. Right? Acknowledged. Right? उसको acknowledge नहीं किया गया. And वो कहते acknowledge तो क्या करना था, वो कहते instead the cookies have been acknowledge करने की वजह से instead the cookies have been, right? Instead the cookies have been you can say left vulnerable
vulnerable in independent India. कहते हैं आजाद भारत में तो आपने हमारा हाल अंग्रेजों से भी बुरा कर दिया इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ये एक उनकी दूसरी शिकायत है। वो कहते सब हुआ, हम लड़े, हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए जो कर सकते थे किया, राइट। बट कहते जब भारत आजाद हो गया तो आपने हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया, आपने हमें जो हमारा ड्यू जो मिलना चाहिए था हमें वो नहीं दिया, आपने हमें कुछ रिकॉग्निशन ही नहीं दी, है ना। तो हम लड़ते रहे, मरते रहे अंग्रेजों के खिलाफ। हमने कभी अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं किया, है ना, लेकिन इसलिए हम कुछ डिजर्व करते थे। जब भारत आजाद हुआ तो हम इतना तो हम डिजर्व करते थे कि हमें एक्नॉलेज किया जाए, है ना, हमारी वल्नरेबिलिटी को नोटिस किया जाए, हमारे इशू को एड्रेस किया जाए। सो इतना तो कम से कम हम डिजर्व करते थे, जो नहीं हो पाया, राइट। सो दिस इज another issue. This is a sort of emotional issue, I would say. Is it clear to you? Right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next बेटा, जो यहाँ फिर सेकंड पॉइंट आएगा, ये तो हमने एक फर्स्ट पॉइंट कर लिया है। सेकंड पार्ट है जो कि कुकीज टेक नागास as threat, right? Cookies take nagas as threat and competitor also. Cookies take nagas as threat and competitor also, right? तो ये होता है बेटा, ठीक है। मेरे साथ जिंदगी में बेटा ऐसा ही हुआ, मैं जहां भी गया हूँ सब लोग मेरे से डरने लग जाते हैं। किसी ने मुझे अपना नहीं बनाया, सबने बस मेरे से डरते रहे, मेरे से दूरी रखने की ही कोशिश की सबने, कि ये पता नहीं हमें क्या खा जाएगा, है ना। सो वैसा हुआ, ठीक है। सो ये होता है कई बार। सो कुकीज टेक नागास एज थ्रेट एंड देयर कॉम्पिटिटर्स आल्सो। सो दिस इज देयर, यू कैन से कुकीज की नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इसमें क्या है बेटा, अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू कुकीज टेक नागास एज थ्रेट। कुकीज उनसे डरते क्यों, ऐसी क्या बात है, कुकीज नागा को एज थ्रेट क्यों लेते हैं, व्हाट इज द रीजन, राइट। तो one major reason is that the Nagas are demanding a separate state which is known as the Greater Nagaland, right? Nagas demand a separate state. Nagas demand a separate state which is called Greater Nagaland, जिसको हम एक ग्रेटर नागालैंड कहते हैं। एंड this greater Nagaland includes the Naga inhabited areas of Manipur also, where cookies are also living. वो कहते कि ये जो नागा लोग हैं ना, ये एक डिफरेंट है ना स्टेट की मांग करते हैं। समटाइम्स वो एक डिफरेंट कंट्री भी कह देते हैं, कहना चाहिए, है ना, जिसको वो ग्रेटर नागालैंड का नाम देते हैं। सो जब वो ग्रेटर नागालैंड की बात होती है तो उसके अंदर मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट्स भी आते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये कुकीज रहते हैं, सो वो भी एरियाज ग्रेटर नागालैंड में आते हैं।
सो एक तो उनको ये थ्रेट है कि अगर नागास की वो बात पूरी हो जाती है, इफ दैट demand is materialized, right, which is put forth by the Nagas, so then you can say Kuki inhabited areas will also fall into the greater Nagaland region, and that may create a problem to them, right? And second जो इनको trouble है Nagas के साथ, because in 1990s में, in 1990s, right, Nationalist Socialist Council of Nagaland, जिसको हम NSCN कह देते हैं, Socialist Council of Nagaland, right, Nagaland, जिसको हम NSCN बोल देते हैं, ठीक है, इसाक मुइवा ग्रुप, क्योंकि इसके बेटा बहुत सारे ग्रुप हैं और इसका एक ग्रुप है इसाक मुइवा ग्रुप, IM ग्रुप कहते हैं इसको, राइट, इसाक मुइवा, right, Isaac Muiva, you can say, is said to have mastermind, right, mastermind, we can say a series of ethnic cleansing against the cookies. वो कहते हैं कि cookies को सफाया कर दिया जाए, और उन्होंने कुछ ऐसा प्लान किया था against cookies. Okay. So as a reactionary and protective measure, right, and protective measure, right, protective measures, cookies, right, cookies, you can say, formed many organizations or outputs, formed many organizations or outfits, so cookies ने बहुत सारी organizations बनाई तब इस चीज, ठीक है, उन्होंने अपने ग्रुप बना लिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे जब थ्रेट होता है तो तब लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, तब ऐसे ग्रुप बनते हैं, राइट, सो लोग आर्म्स उठाते हैं, सो वही कुकीज ने किया, राइट, ओके बेटा, सो दैट इज बेसिकली देयर, राइट, सो नाउ व्हाट इज देयर, सो नाउ बेटा there are many, approximately we can say, you can say 23-24 cookie outfits are there at present, right, more than 20 we can say cookie outfits are there, इनके ग्रुप से जो लड़ते हैं, outfits are there, right, outfits. So beta, what happened in 2008, two cookie representative organizations, ये जो दो cookie representative organizations थी, इनमें बेटा one of the organization was called, we can say, Cookie National Front, right, Cookie National Front, right, and the other organization was Cookie National Front, KNF, and the other organization was, you can say, United People's Front, right, so this was the second organization, United People's Front, right, so ये बेटा क्या है दोनों, both these organizations are the umbrella organizations of various cookie outfits, right, ये क्या है, ये umbrella organizations है, these are umbrella organizations means जैसे बहुत सारे ग्रुप
एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच इकट्ठी हो गई, राइट। ठीक है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कुकी आउटफिट्स, राइट। सो ये जो बेटा कुकी नेशनल फ्रंट है, राइट, सो इसके अंडर अप्रोक्सीमेटली 7 कुकी ऑर्गेनाइजेशन, 7 कुकी आउटफिट्स हैं जो इसके अंदर हैं, और जो यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट है इसके अंडर अप्रोक्सीमेटली 6 कुकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके नीचे हैं, राइट। सो बेटा ये जो लोग हैं 2008 में these cookie representative organizations, right, entered into an understanding, right, entered into an understanding with government of India and government of Manipur, right, entered into an understanding with government of India and government of Manipur, we can say, right. So इन्होंने उनके साथ एक इन्होंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, राइट, एंड विच इज नोन एज, राइट, विच इज नोन एज, जिसको हम कहते हैं विच इज नोन एज सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, राइट, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, इसको हम SO बोलते हैं, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, राइट, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, ओके। सो ये कहते हैं कि हम टिल फरवरी 2020 तक हम अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड करते हैं। हम कोई यू कैन से ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ब्लड शेड, हम अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड करें, ठीक है। सो बेटा ये जो this arrangement expires in February 2020, but it was extended till August, we can say 31st 2020, जो अभी निकला है। सो ये यहाँ तक एक्सटेंड कर दी गई थी कि we will keep our operation suspended, right, till we can say that time. Is it okay, beta? Is it okay? So we will keep it suspended. Yes, sir. Right. So beta, that is basically the thing, right? So beta, now what do they demand? Now what do cookies demand, right? बस 5-7 मिनट का ही काम है बेटा, ठीक है। Now what do cookies demand? अब कुकीज क्या चाहते हैं? भाई किसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो। मैं कल से मैं सच में मैं ना इधर से वो क्लास में से निकाल दिया जिसका माइक ऑन, क्योंकि मेरे हाथ में कंट्रोल है, आपको मालूम है ना। व्हाट इज कुकीज डिमांड? कुकीज की डिमांड क्या है, राइट? व्हाट इज कुकीज डिमांड? उनकी डिमांड क्या है? सो बेटा बेसिकली टुडे कुकीज डिमांड, भले उनमें से कुछ ग्रुप हैं जो कहते हैं कि आप हमें यू कैन से राइट सॉर्ट ऑफ सेपरेट स्टेट दे दो, तो ये कर दो वो कर, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। वो कहते हैं कि हम तो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ही हम कोई एडजस्टमेंट चाहते हैं, राइट। हम कोई एंटी नेशनल नहीं है, हमारा कोई सेसेशनिस्ट पर्पस नहीं है। सेसेशनिस्ट मीन्स वी डोंट वांट टू बिकम सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, राइट। वी आर नॉट एंटी नेशनल्स, वी वांट आर वी कैन से इश्यूज टू बी एड्रेस्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहते हैं कि हमारे इश्यूज आप कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर रहकर के ही आप उनको एड्रेस करते हैं, राइट। सो अब बेटा वो क्या चाहते हैं? अब बेटा वो चाहते हैं यू कैन से बोडोलैंड लाइक, कल हमने किया था ना, बोडोलैंड लाइक वी कैन से टेरिटोरियल काउंसिल। वो कहते हैं कि जैसे आपने वहाँ एक टेरिटोरियल काउंसिल बनाई है ना,
अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वैसे ही 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप हमारे लिए भी आप एक टेरिटोरियल काउंसिल बना दो, राइट, टेरिटोरियल काउंसिल बना दो, राइट, एंड दैट विल बी नेम्ड एज अ कुकी लैंड, दैट विल बी नेम्ड एज अ कुकी लैंड, राइट, टेरिटोरियल काउंसिल। उसका नेम ये रख दो, कुकी लैंड टेरिटोरियल काउंसिल, उसका आप नेम रख दो, राइट। और ये कहते जो कुकी लैंड टेरिटोरियल काउंसिल है ये हमारी एंसेस्ट्रल लैंड है जो उसी के ऊपर बना दो, ठीक है, ऑन देयर एंसेस्ट्रल लैंड, जहां हम पहले से रह रहे हैं, राइट। सो आप वहीं पर बना दो, ऑन देयर एंसेस्ट्रल लैंड, राइट। इट शुड बी अंडर 6th शेड्यूल, वो 6th शेड्यूल के अंदर आप हमें बना दो। Even the cookies have submitted a political map also to the government for this cookie land territorial council, right? Even they have submitted a political map also, right? Political map also to the government, right? Suggesting the areas, right, to be taken areas to be taken in the you can say this cookies territorial council, कि ये एरियाज आप इसमें डाल दो और आप ये बना दो, ठीक है। सो इसके अंदर बेटा एक इम्पोर्टेंट बात है, ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया मांग रहे हैं और इसके अंदर बेटा एक टर्म आती है सदर हिल्स रीजन, राइट, सदर हिल्स रीजन। सो कल को अगर कोई आपको एग्जामिनेशन में बेटा पूछता है कि सदर हिल्स रीजन कहाँ है या सदर हिल्स कहाँ है, राइट, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज इन द मणिपुर स्टेट, राइट। कल को आपको अगर कोई एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछता है, राइट। सो बेटा दे डिमांड दैट वी कैन से, राइट, सदर हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट। वो कहते हैं कि आप एक सदर हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट बना दो, राइट। दे वांट सदर हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट, राइट, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट। कहते हैं आप ये बना दो और हमारा काम चल जाएगा, राइट। एंड बेटा ये जो सदर हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट है ना, इसमें भी बेटा क्या प्रॉब्लम है कि इन 1971 right, the government enacted a law called we can say Manipur Hill areas, called Manipur Hill areas, right, Manipur Hill areas Autonomous District Council Act, Autonomous District Council Act, right. So autonomous District Council Act, District Councils Act 1971। सो ये बेटा एक एक्ट पास हुआ था, राइट। सो बेटा उस एक्ट के अंदर बेटा गवर्नमेंट ने खुद ही प्रॉमिस किया था कि वी विल मेक 6 you can say such type of autonomous district councils in Manipur, right. So there was a you can say proposal of 6 you can say autonomous district councils, right, in Manipur, councils in Manipur, and one of those autonomous district councils was this Southern Hills Autonomous District Council. So that is why वो कहते हैं कि हम तो वही मांग रहे हैं जो आपने लॉ में पास किया है, हम कौन सा आपसे कुछ सेपरेट मांग रहे हैं, राइट। सो हम तो कहते हैं कि आप बस एक्ट ही इम्प्लीमेंट कर दो और क्या है, राइट। सो दिस इज एट प्रेजेंट व्हाट दे आर डिमांडिंग, राइट। वो कहते हैं कि आप हमें कुछ सेपरेट दे दो, राइट, कि आप हमें कुछ यू कैन से सेपरेट दे दो, राइट। सो this is
this is the main thing, beta, right? So this is the main thing we can see, right? And beta, apart from this, let us just 1 minute only. So apart from this, beta, there is one important thing, that there are some other tribal, right? Some other tribal in the state. बस मैं just उसी को लेता हूँ. Some other tribal in the state, right? So as far as some other tribal in the state is concerned, one is beta, right? This piety is one, right? Second is beta Zadoju. It is the second group. Third group is beta Yankee, GNGTE, Yankee is the third group. And the fourth tribal group, that is the, we can say, Waifi, VAIPH, we can say E, Waifi is the next group, right? Waifi is the next group. Bus beta, within 2-3 minutes, I'm going to wind up the class. So Waifi, VHEI, right? Waifi. So this is, so beta, these groups combined. अगर हम इन चारों ग्रुप्स को बेटा कंबाइन कर लेते हैं, इन चारों पांचों ग्रुप्स को, so बेटा these are commonly known as zomi. These are commonly known as zomi. So ये जो zomi people हैं, they consider themselves as different from Kukis, Nagas, and Mighty, right? Consider themselves different from those, right? And beta in 1997, क्योंकि बेटा इनको भी अपना threat है ना, in 1997 they constituted, right? They constituted a Zomi, right? Reunification army, reunification army. So ये इनके cause के लिए लड़ती है, राइट? जोमी रीयूनिफिकेशन आर्मी. सो ऐसे बहुत सारे आउटफिट्स हैं वहाँ स्टेट के अंदर, राइट? सो ये मेन था जो हमने बेटा इसके बारे में जो हमने कर लिया है, जो हमने स्टडी किया है इसके बारे में, राइट? सो बेटा in the background of, we can say, all these things, right? In the background of, we can say, all these things, right? All these things as on today, right? Massacre, riots, right? And you can say, right, burning, torching, right, rapes, loot. These are the very common things, common problems in the state of Manipur, right? So this is the you can say a whole story about the problem in the Manipur. And beta, now just 1 minute, right? Now beta, I would like to tell you here, okay, beta, as far as this is concerned, beta, this region, जो बेटा ये रीजन है जो मैंने ब्लू लाइन के अंदर कर दिया है, this region है, this particular region, yes beta, this particular region है जो, right? So this is the region which is demanded by the Kukis people as Kuki land. वो कहते कि ये पूरा रीजन आप दे दो हमें. सो बेटा आप देखो बेटा ये क्या है, more than 50% of the मणिपुर तो ये मांग रही है कि हम यहाँ रहते हैं, हम ये नीले वाला पार्ट छोड़ के और ऊपर व्हाइट वाला पार्ट छोड़ के बाकी ये सब हिस्सा मांगते हैं. खाली बेटा इतने पार्ट को छोड़ के ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला है ना, एंड ये जो ब्लू वाला है इसको छोड़ के बाकी सब मांगते हैं. ये कुकी लैंड का है, राइट? आपको समझाने के लिए है, ये कुकी लैंड का है. और ये वाला वो पार्ट है जो मणिपुर रिवर वैली का पार्ट है, ब्लू वाला, राइट? इसमें लोकतक लेक है, इसमें माइटी पीपल रहते हैं. और जो ये वाला एंटायर पार्ट है ये कुकी लोग मांगते हैं कुकी लैंड की फॉर्म में, राइट? और वो वाला ऊपर है, समझे? सो मणिपुर की ज्योग्राफी, मणिपुर की थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री और मणिपुर का जो एथनिक
इशू है वो हमने जितना हो सकता था डिस्कस कर लिया है। मुझे लगता है अरे ऊपर आपको वाला कौन सा पार्ट है? ये बेटा अदर लोगों का है, ये नहीं मानते है ना, ये पूरी स्टेट है ना, बेटा पूरी स्टेट में से इतना यस हिस्सा सर, मांग यस। रहे हैं कुकीज, ठीक है, कुकीज लोग इतना हिस्सा मांग रहे हैं, राइट। और बेटा ये जो बेटा ब्लू लाइन के नीचे वाला हिस्सा है ना, और इसके अंदर भी बेटा इसको छोड़ना है, ये जो बेटा ब्लू ओवल है ना, इसको छोड़ना है बस, राइट। सो इसको छोड़ ओके के सर, गॉट हाँ, इट। सो बाकी वो पूरा पार्ट मांग रहे हैं, राइट। सो ये है बेटा, मुझे लगता है शायद परहैप्स आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होगी कि मणिपुर की अब